Good morning, Kundu. BK Fazil, thank you for joining. Good morning, Abdul Abbas. But sorry, not Abdul Abbas. कैसे आप लोग? वालेकुम सलाम एहसन, कैसे हैं आप? Shafqat Alam, thank you for joining. Lee 1726, thank you. How's trading going? Morning, Sam Raja. आप लोग सारे UK में जो मुझे morning कह रहे हो? Because most of the time I get more Australian and New Zealand members, so they would rather go call good night or good evening. Thank you, TikToker, for joining. Thank you, Shafqat, for liking the live. Live को like करो, share करो. Let's keep it rolling. Afternoon, Mariam. Afternoon. तुम दुबई पहुंच गई हो. तुम दुबई पहुंच गई हो, Mariam. I can see that. How's Dubai? Sam Raja. आप UK में हो, हाँ, which is why you're saying good morning. क्योंकि usually इसमें ज़्यादातर लोग आते हैं from Australia, New Zealand, so they would just rather call me, say good evening. Yeah, I can see that, Mariam. I can see the smiles. Enjoy karo. How's the weather there? I'm already missing it. I just feel like going back. कितने दिन को आप वहाँ पे, Mariam? How long are you gonna stay there? Bitcoin का बताओ. Bitcoin कहाँ पर पहुँच गया हुआ है? Bitcoin is jumping and pumping. इसको resistance मिल रही है 35266 पे on a 4-hour chart. But don't worry. हम लोगों को it should go and test 35,000 again. 35 to 8 पे इसको दोबारा जाना चाहिए. For now, bears are in power. For now, the bullish momentum is a bit dying. Our pay, it's like resistance है इसको. There's a complete channel from 34,494 से लेके 34,825 पे पूरा channel resistance gone in hourly chart. So let's see. Weather is amazing, 32 degrees, loving the heat. I will be back on 13th of November. Wow, मत बताओ मुझे, मरियम, मत बताओ. मत बताओ. Ethereum is breaking from its range. We'll see 1890. Very boring, no FUD. नहीं. अब we don't need FUD. अब we need FOMO. हम लोगों को FOMO चाहिए. हम लोगों को इस वक्त FOMO चाहिए. We need FOMO. And FOMO is building up. FOMO is building up. Alone कल सारे सिर्फ कल और परसों जो कि weekend था, around 1 billion what do you call them, stable coins have been moved into exchanges, which obviously is not exchanges में इस वजह से नहीं गए कि वो cash में fiat में convert होंगे. Exchanges में इस वजह से गए कि they will be used to buy cryptocurrencies. So I'm not saying कि 1 billion will move the market, obviously not. But this whale alert, due to whale movements हो रही है, it's going to create a positive sentiment, and we are going to attract more institutions and more retail investors into FOMO. So what we want is, we don't want FUD anymore, we want FOMO right now. Thank you, Asad, for joining. So please you don't want FUD now, you want FOMO. You want FOMO. XRP hold on. बिल्कुल XRP को hold करो. XRP की भी good news है. Some good news are building around XRP. 9th of November को XRP की एक बहुत important update आएगी, because 9th of November को कोर्ट की और Ripple Labs की meeting है, hearing है, sorry, where they would be finalizing things towards a settlement. Rumors has it कि Ripple Labs, SEC would be asking for a few $100 million. और ये बात मैं तुम लोगों को, आई थिंक अगर तुम लोग मेरी पिछले 2 साल की पिछली वीडियोस जाके देख लो तो मैं मुस्तकिल कह रही थी कि ये इवेंचुअली सेटल इसी में होना है कि SEC ने कहना है कि यू पे एज पेनल्टी एंड वील लेट यू गो, और एग्जैक्टली वहीं पर बात जा रही है. हाउएवर इतनी जल्दी हम लोगों को उम्मीद नहीं है कि कोई कंक्लूजन हो जाएगा, कोई सेटलमेंट हो जाएगी. इट मे टेक अस टू अप्रैल, विच इज़ इवन बेटर, बिकॉज अप्रैल तक और बहुत सारी हैप क्रिएट हो जाएगी अबाउट क्रिप्टोज एंड बिटकॉइन एंड स्पॉट ETFs एंड halving and all. So that could shoot the price up to $1.852 for XRP. So yes, your question, shall I hold? Definitely hold करो. अगर तुम लोग long open करना चाह रहे हो XRP की, go for it. This is the right time. मैं ठीक हूँ सद, आप बताओ आप कैसे हो? Dot buy price for spot please. Dot को आप spot पे buy करना चाहते हो तो you should go for, I don't think so आप डॉट की बाएंगे. This is not the time to buy. मैं बार बार तुम लोगों को बताती हूँ कि never buy green candles and never sell red candles. So I don't know why do you want to buy now, to be very honest. I don't know why, but even if you want to buy, so wait until 4.223. This is not the time to buy.
Bitcoin 100,000 soon. नहीं Bitcoin 100,000 soon नहीं हो रहा. Let's be realistic. Bitcoin is not going to 100,000. What do you see Powell gonna rise the rates? जो यार I'm not an economist, तो मैं कोई बात बहुत ज़्यादा confidently तो नहीं कह सकती, but what other analysts are saying is that he will not raise interest rates because he don't want to break the things. And if interest increase, thank you Wasim Khan for joining and for the gifts, because if interest rates अगर वो मज़ीद बढ़ाते हैं तो they're going to break something and they don't want that. Already war, ठीक है, everyone knows who's behind Israel, so we don't need to get into those details. War, high interest rates, high inflation, higher interest rates, election year, presidential election year. So I don't think so कि वो इतना soft landing or slash recession. So I don't think so कि they have much room to इतने ज़्यादा वो खोलने के लिए. Thank you Tabish for the rose. Thank you so much. इतने ज़्यादा what do you call it? इतने ज़्यादा fronts पे लड़ने के लिए. I don't think so they have much room. तो let's see. But I don't think so it makes sense for him to increase the interest rates. I don't think so. But again, I'm not an economist. I don't understand economies much. So Solana किधर तक जा सकता है यार? मैंने अभी Solana का एनालिसिस किया था टेलीग्राम के ऊपर. तुमने टेलीग्राम को क्यों नहीं ज्वाइन किया है तुम लोगों ने यार? टेलीग्राम को ज्वाइन करो. Solana का I just had this Solana is pumping like anything, and the reason is कि वो जो FTT का फट था ना वो ख़त्म हो गया. वो जो मैं बार तुम लोगों को बता रही थी कि it's just a फट, कोई Solana डंप नहीं हो रहा. याद है सितंबर में अक्टूबर में इतना ज़्यादा रोला मचा हुआ था कि Solana डंप हो जाएगा और FTT सारे भेज देंगे. कुछ भी नहीं होता. Anyway, Solana can go as high as, इसको retracement होगी. Don't forget कि इसको retracement होनी है. 35.2. अफशीन जी यूके में क्रिप्टो कौन सी प्लेटफॉर्म पे होल्ड करें? खुरम सरफराज द बेस्ट इज मैक्सी ग्लोबल. आई यूज मैक्सी ग्लोबल, बाइनेंस. मैक्सी ग्लोबल एंड बाइनेंस इन माय ओपिनियन आर द सेफेस्ट. और अगर आपने मैक्सी ग्लोबल पे अभी तक साइन अप नहीं किया तो डू आस्क मी फॉर माय रेफरल लिंक एंड आई एम गोना शेयर इट विद यू ऑन टेलीग्राम. Can you tell us what Bitcoin will hit in bull run at maximum? Thanks. But Bitcoin would go as high as I think anywhere from 85,000 to 120. I know ये बहुत wide range है, बहुत wide range है तुम लोगों को बता रही हूँ 85 to 120. But it's too early to say. I don't want to say something जो कि पूरी ना हो, and I don't want to create too much of. I want to stay realistic. So 85, 83, 85, 82 is the least it can go, and as high as 120. Any good coin ready to be bought now on spot for quick profit in coming weeks? FT अगर आप कोई quick profits बनाना चाहते हो तो go for the अब quick profits का कह रहे हो तो Matic है, Solana है, XRP है for quick profits, but not big profits. So there's a difference between quick profit and big profit. I'm talking about quick profit and I'm not talking about big profit. FT, if you agree, just send me a thumbs up. यार मुझे thumbs up भेजते रहा करो तुम लोग. Like keep sending me the comments, keep sharing the live, keep sending me the likes ताकि ज़्यादा से ज़्यादा roll out हो. That's how the TikTok algorithm works. When are we listing on tier 1? V as in VRL. वसीम खान आप VRL की बात कर रहे हो. शिबा का बता दे. शिबा का पूछिए आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं. अमेजिंग पैल कौन सी एक्सचेंज यूज़ करें? मैक्सी ग्लोबल. थैंक यू FT. मैक्सी ग्लोबल यूज़ करो. अगर तुम लोगों ने मैक्सी ग्लोबल पे अभी तक साइन अप नहीं किया तो डू आस्क मी फॉर माय रेफर लिंक एंड आई एम गोना शेयर इट ऑन टेलीग्राम. Thank you FT if you agree. Yes VRL इंशाल्लाह मैक्सी ग्लोबल पे लिस्ट हो रहे हैं हम लोग. लेकिन मैक्सी ग्लोबल पे फाइनल लिस्टिंग से पहले वी विल बी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हाइप, अ लॉट ऑफ मार्केटिंग करेंगे, अ लॉट ऑफ हाइप करेंगे. AMAs हम लोगों ने करने जो कि सारे स्केड्यूल्ड है. सो अभी एवरीथिंग इज डन फ्रॉम आवर एंड. हम लोग के एंड पे सब चीज़ें फाइनलाइज हो गई हुई हैं. व्हाट वी वेटिंग फॉर मैक्सी ग्लोबल इज टू सेंड अस कंफर्म द डेट फॉर द लिस्टिंग, क्योंकि हम लोग अभी फॉरन लिस्ट नहीं होना चाह रहे. हम लोग एटलीस्ट फॉर फ्यू वीक्स में लिस्ट होंगे. नंबर 1, क्यों देर से लिस्ट होना चाह रहे हैं? इस वजह से हम लोग हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में वर्ड स्प्रेड हो, ताकि जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो खुद अपनी आंखों से देखें प्राइस एप्रिसिएशन.
और मार्केटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज AMAs, आस्क मी एनीथिंग सेशंस ऑन ट्विटर एक्स स्पेसेस, अब पता नहीं स्पेसेस का भी उन्होंने नाम चेंज कर दिया भाई, टेलीग्राम, जो उनकी कम्युनिटीज़ है वहाँ पे मुझको, वकास को और जो हम लोग के और टीम मेंबर्स हैं, विल बी डूइंग AMAs, सो उस सारी की स्केड्यूलिंग की वजह से वी जस्ट वेटिंग फॉर द डेट टू हेयर फ्रॉम देम फाइनली. वालेकुम अस्सलाम सिजलर ऑस्ट्रेलिया. थैंक यू सो मच एलिगेंस कैंडल फॉर शेयरिंग माई लाइफ. शेयर करते रहो लाइव को शेयर करो और प्लीज़ लाइक्स भी मुझे भेजते रहो. ऑस्ट्रेलिया क्या कहना चाह रहे हो आप आगाशीन? अस्सलाम, इज़ इट गुड टू ऐड शिबा इन पोर्टफोलियो फॉर बुल रन? हाँ जी बिल्कुल, इट्स गुड वन टू ऐड पोर्टफोलियो. देखो तुम लोग जब मेरी काफ़ी सारे मेरे बहुत रेगुलर फॉलोअर्स है, ठीक है, तो तुम लोगों को मैं एक बात फिर रिमाइंड करा देती हूँ, ऑल्दो मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, फिर रिमाइंड करा देती हूँ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बुल रन, सो आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स आर यू expecting, and what kind of profits are you targeting? 2x, 20x, 200x, there's a wide range of profits you should be targeting. If you want to target bigger profits, then you have to go high risk, right? But अगर आप ये कहते हो कि मुझे बड़े profits नहीं चाहिए, I want to stay modest, मैं अपने risk appetite नहीं बढ़ा सकता या बढ़ा सकती, और I don't care about परसेंट इन गेन्स, व्हाट आई केयर अबाउट इज कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे. तो अपने आप को तुम दो कैटेगरीज में डिवाइड करो. आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, डू आई वांट हाई प्रॉफिट्स लो रिस्क, और डू आई वांट low profits like lower gains and high risk, lower gains and lesser risk. सही है. तो अगर तुम लोग लो रिस्क और लेस गेन्स पे जाते हो तो बेस्ट है already established tokens, high market cap tokens जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, फैंटम, एडा मुझे इन्वेस्टमेंट टोकन नहीं लगता, ना ही मुझे XRP इन्वेस्टमेंट टोकन लगता है, मैटिक, राइट, इनमें तुम जाओ. लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड चाह रहा हूँ, तो देन यू हैव टू गो फॉर लो मार्केट कैप कॉइन्स. ठीक है, मिड मार्केट कैप कॉइन्स जो हैं उनको, दे आर मिड फॉर अ रीजन, एंड द रीजन इज के उनमें जितनी इन्वेस्टमेंट आनी थी वो आ चुकी है. क्या वो इन्वेस्टर का, अपने आप से खुद सवाल करो, डोंट लिसन टू मी, अपने आप से खुद सवाल करो, जो मिड मार्केट कैप कॉइन्स हैं क्या उनके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो मजीद न्यू इन्वेस्टर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेंगे? जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, क्या वो मिड मार्केट कैप कॉइन्स में जाएंगे, या वो ये कहेंगे कि यार हम 5-10 मिलियन डाल के वी वांट टू 200x? गेटिंग माय पॉइंट? Think like an investor before asking me कि हम कौन से tokens खरीदें. First tell me you want high risk, or you want you want to go high risk and high profits, or you want to stay low risk and low profits, and then I can advise you, I can suggest you, not advise you, I can suggest you or share my opinion. If that makes sense, so please मुझको thumbs up भेजो so that I know that you guys are connected with me. Send your referral. आगाशीन मैं आपको टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, ठीक है? I'll post it on Telegram right now. And don't forget to claim your bonus. तो मेरा रेफरल लिंक यूज़ करने के लिए मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे. मेरा रेफरल लिंक यूज़ करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव नॉट साइंड बिफोर, और अगर आपने पहले साइन अप किया हुआ है मैक्सी के साथ तो यू हैव टू मेक अ न्यू अकाउंट टू यूज़ माई रेफरल लिंक. हाउ अबाउट माई कॉइन? किरत पूछिए मुझसे क्या सवाल पूछना चाह रही हो VRL का. आस्क मी नाउ, आई एम गोना रिप्लाई यू. High profit coins. Kirat, high profit coins would be low market caps और hidden gems, या वो tokens जो कि अभी market में अभी seed funding phase में है. अब again जो मेरा अपना टोकन है वो तो तुम लोगों को पता ही है, लेकिन उसके अलावा इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनीथिंग एल्स, सो हंट फॉर द वंस जो कि लो मार्केट जेम कॉइन्स हैं, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता. नंबर 1. नंबर 2, जो कि अभी सीड फंडिंग फेज़ में, क्योंकि होता ये कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सीड फंडिंग में बहुत सस्ते अपने टोकन्स बेचते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत नया प्रोजेक्ट इज़ जस्ट अ बेबी, राइट? तो बहुत सस्ते अपने टोकन्स वो बेचते हैं सीड फंडिंग फेज़ में. वहाँ पे तुम उनको क्रैप करो एंड वेट फॉर एक्सचेंज लिस्टिंग. अगर उनका वेस्टिंग पीरियड नहीं है, गुड इनफ. अगर उनका वेस्टिंग पीरियड है तो होल्ड ऑन एंड देन यू मेक मनी. दैट इज़ हाउ यू गोना मेक क्विक एंड बिग मनी इन दिस मार्केट.
गिवन हम लोग बुल रन में जा रहे हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला उस वक्त नहीं चलेगा जब हम लोग बुल रन से बेयर मार्केट की तरफ जा रहे होंगे। अगर आप बुल रन से बेयर रन में जा रहे हो तो ये फॉर्मूला नहीं वर्क करेगा जो मैंने आपको अभी बताया है। ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब आप बेयर मार्केट से बुल मार्केट की तरफ जा रहे हो। डू यू गाइस एग्री? इफ यू एग्री तो प्लीज मुझको थम्स अप भेजो। Why didn't you mention Chainlink? I'm sorry, Chainlink भी बहुत अच्छा है और Quant दोनों मैं भूल गई थी क्या नाम, इरफान महमूद, लिंक एंड Quant दोनों बहुत अच्छे हैं। बट अगेन दे आर हाई मार्केट कैप कॉइन्स। ये आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट्स देंगे, लिमिटेड प्रॉफिट्स देंगे, इनसेन गेन्स नहीं देंगे, क्रेजी गेन्स नहीं देंगे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड मैं इतने लोगों से ऑनलाइन भी कनेक्टेड हूँ और ऑफलाइन भी कनेक्टेड हूँ। मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, क्रिप्टो मार्केट में आने के हर किसी का एक रीज़न होता है, एंड आई हैव नॉट फाइंड एनी अदर रीज़न येट, आई हैव नॉट फाइंड एनी अदर रीज़न येट। और मैं कोई 100,000 लोगों से तो कनेक्ट हो चुकी हूँ रिगार्डिंग क्रिप्टोज, राइट? There has no been any other reason but to make quick and big profits, like crazy profits. अगर आपका भी यही मकसद है तो crazy profits बनाने के लिए either you invest billions ताकि वो आपकी एक्सेस मल्टीप्लाई हो and you can make billions, या if you're not even investing millions and you're just talking about hundreds and thousands or just few thousands, then you have to go for the hidden gems and the low market cap coins, ताकि आपके 200x 20x 30x वाली कहानी वो आपको इन्हीं coins में मिलेगी। Having said that, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि go and necessarily go buy and my own token. I seriously don't care. We have enough investments and enough funding to take the project to the next level, which we are. My whole point is hunt for the ones जो कि अभी seed funding phase में through private communities. I will send you a referral. मैंने अपने referral आकाशीन पोस्ट कर दिया टेलीग्राम के ऊपर। सुलाना किधर, मैंने अभी बताया था आपको सुलाना का यार। Hi Shadi, thank you for joining. Analysis on Nair protocol. Nair protocol is good. Nair protocol is considered as mini Solana. तो मुझको ये लगता है कि अगर बुल रन की बात करें कि चलो नेयर की इतनी डेवलपमेंट्स नहीं भी होती जो कि फ़िलहाल नहीं हो रही हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ मिनी सोलाना या बिकॉज ऑफ सोलानाज क्या कहना चाहिए उसको, शेडो ऑन इट, इट विल डू सम गुड. सो इट शुड डू गुड डेवलपमेंट्स. आर्क कॉइन ऑलरेडी डिड 80% अमेजिंग विच वॉज लिस्टेड ऑन बाइनेंस. हाँ ठीक है, 80% उसने कर लिया, लेकिन जब प्रॉफिट टेकिंग होगी तो वो 80% नहीं, वो 90% गिर भी जाएगा. मोहम्मद प्लीज़ समझो, प्लीज़ तुम लोग एक्सचेंज लिस्टिंग की कहानी को, प्रोसेस को, एक्सचेंज लिस्टिंग के पीछे जो कुछ हो रहा होता है उसको समझने की कोशिश करो. डोंट जस्ट गेट एक्साइटेड कि आर्क लिस्ट हुआ था तो 80% चला गया, इस वजह से वो 80% नहीं किया कि उसकी कोई अचानक ओवरनाइट डेवलपमेंट हो गई. इट मस्ट बी अ गुड प्रोजेक्ट. मैंने उसको स्टडी नहीं किया हुआ है. मैं ये नहीं कह रही हूँ एक्सचेंजेस तक पहुँचना, बाइनेंस तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं होता. फर्स्ट टॉप टियर एक्सचेंजेस तक पहुँचना, इट्स नॉट ईजी. आई एम अ प्रोजेक्ट ओनर माई सेल्फ. आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेजिंग फंड्स रेज तो होना बहुत आसान सी बात हो जाती है. इफ़ यू आर आउट देयर, इफ़ यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, इफ़ यू आर प्रोजेक्ट ओनर, जैसे मैं प्रोजेक्ट ओनर भी इन्फ्लुएंसर भी हूँ, सो इट्स प्रीटी ईजी थिंग, वो कोई मसला नहीं है. द मसला इज़ कि मार्केट मेकर्स को के थ्रू आपने नेविगेट करके और उनकी जो, बिकॉज यू सी बहुत सारी जो एक्सचेंजेस होती हैं ना उनके पास बॉट्स होते हैं, BOTS बॉट्स होते हैं. तो जो ये हम लोग ट्रेडिंग वॉल्यूम देख रहे होते हैं ना, इसके पीछे रियल पीपल नहीं बैठे होते, इसके पीछे बॉट्स होते हैं. आई एग्जैक्टली नो हाउ मार्केट मेकिंग वर्क्स. ठीक है, मार्केट मेकर्स के बारे में आम इंसान को नहीं पता होता है. व्हेन आई वेंट टू दुबई जस्ट लाइक लास्ट वीक, आई मेट फ्यू मार्केट मेकर्स जो ला बैंक के साथ हैं, सॉरी ला टोकन के साथ हैं, जो एल बैंक के साथ है, जो मैक्सी ग्लोबल के साथ है, जो बाइनेंस के साथ हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड जो कि दुनिया को पता ही नहीं है. तो ये जो तुम लोग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देख रहे होते हो ना, इससे ज़्यादा खुश मत हुआ करो. दे आर एक्चुअली बॉट्स एंड नॉट रियल पीपल बाइंग. बट एनी वेज मैं उस सारी डिटेल में नहीं जा रही हूँ. सो येस, द थिंग इज कि अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, होल्ड ऑन टू योर एसेट्स टू सी द रियल प्राइस अप्रिसिएशन. इफ़ यू गाइस एग्री प्लीज़ मुझको थम्स अप भेजो. मैडम VRL को अभी ले सकते हैं मेटामास से, बिल्कुल ले सकते हो अहमद राजपूत. आप बिल्कुल VRL को अभी मेटामास से ले सकते हो. हम लोग की प्री सेल और सीड फंडिंग जा रही है. हम लोग इसी वजह से लिस्टिंग भी डिले कर रहे हैं ताकि हम लोग की कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए बिफोर दी गोरा कम्युनिटी कम्स इन. जब मैं AMAs करना शुरू कर दूँगी, जब मैं ट्विटर स्पेसेस पे जाना शुरू कर दूँगी, तो वी विल बी अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ गोरा पीपल, राइट. तो ऑफकोर्स उसकी फिर हम लोग प्री सेल, सॉरी सीड फंडिंग बंद कर देंगे, सीड फेज बंद कर देंगे. तो अभी बाय करना है तो कर लो बिफोर वी एक्चुअली गेट ऑन टू द गोरा कम्युनिटी. सो दिस इज द टाइम टू बाय.
Next move of Bitcoin, it's very bullish. Maz 1B, what's your project and where to invest? Mohammed Junior, the project is called Virtual X VRL. सारी details Telegram पे हैं. अगर आपको pinned messages में, if you want more details, just ask me. If you have any questions, just ask me. Because once I will be doing MAs on Twitter, on X and Spaces and Telegram, then I may not be that reachable or accessible. So please make most use of these few weeks. जो भी सवाल है मुझसे पूछो. मेरे टोकन इट्स कॉल्ड वर्चुअल एक्स इज़ ए मोबाइल नेटवर्क. हम लोग ने 5G मोबाइल नेटवर्क को इंटीग्रेट किया है विद ब्लॉकचेन. Why should you buy it? Because it's 5G integrated, blockchain integrated 5G network in the UK and in Europe. हम लोग तकरीबन 700 million लोगों की population को target कर रहे हैं. We will be using eSIMs. eSIMs इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि you will be contributing towards bringing down the carbon footprint जो कि physical sims से आता है. Having said that, if you want to use physical sims, हम लोग वो भी issue करेंगे. Competitive packages होंगे हम लोगों के. For example, इस वक्त आप gift caf पे जाते हो, 3 पे जाते हो top up कराने के लिए, तो you're compelled to buy 5 GB or 7 GB or 10 GB. There's nothing between 5 GB and 7 GB. There's nothing between 7 GB and 10 GB. What if I just want to use 3 GB? I don't have a package, right? कॉम्पिटिटिव पैकेजेस होंगे. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग एड्रेस कर रहे हैं थ्रू आवर मोबाइल नेटवर्क इज़ स्पीड, इंस्टेंट कनेक्टिविटी इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूके टू यूरोप और इंशाल्लाह आगे जाके ग्लोबली. So let's say अभी मैं दुबई में मैं लैंड की हूँ, तो I would be connected with Etisalat. Those messages are very annoying. I don't want to go to a shop and top up my phone, my SIM with Etisalat. I just want to stick to my own network in the UK. इस प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं थ्रू वर्चुअल मोबाइल. हम लोग के मोबाइल का नाम होगा वी मोबाइल. हम लोग की ऐप का नाम होगा वी मोबाइल. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट दिस पॉइंट इन टाइम इन द यूके अलोन एवरेज यूजर इज वेस्टिंग 2 GB ऑफ मोबाइल डेटा दैट ही और शी इज़ नॉट कंज्यूमिंग. और वो जो वेस्टेज हो रहा है उसको कौन पे कर रही हूँ? मैं पे कर रही हूँ. सो आई एम एक्चुअली पेइंग टू वेस्ट माई मोबाइल डेटा. This is the problem that we're going to address through Virtual X. Yeah, I think I've covered everything. कोई और क्वेश्चन पूछो. I'm getting more and more fluent, right? पिच कर करके प्रोजेक्ट को पिच कर करके मुझे याद हो गया. मुझे सोते भी उठा कर पिच करवा लो. I'll pitch it. Can you please tell me? इसका मैंने जवाब दे दिया. BlackRock was invested in ARK on the sub-intuition. BlackRock was invested in ARK on the sub-intuition. Didn't get it, Mohammed. क्या कहना चाह रहे हो? Well said. Thank you, Dark Soldier. Welcome, Salam. Good look. Thank you, Kirat. The cooking core join. Thank you guys for joining. Please keep sending me the likes, keep sharing the live. I need lots of likes and sharing. बिटकॉइन का आप लोग मुझसे नेक्स्ट पूछ रहे थे. बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या है? ऑन ए 1 hour चार्ट बिटकॉइन इज ड्रॉपिंग. ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है. Good, not a problem. I'm happy as far as it's staying above 34,000 levels. As far as it's staying above 34,494, I'm happy. Right now it is testing its 20 MA. 20 MA को ही टेस्ट कर रहा है और हम लोगों को सिर्फ मोमेंटम चाहिए. We need some momentum for Bitcoin to go up. It should break 34,826. If it breaks 34,826, which is a serious resistance channel at this point in time, 34,886, so we are again very, very bullish. On a On a 4 hours, it's getting bullish again. Bulls will be in power again. RSI is getting exhausted, which means that buyers will come in. So far so happy with Bitcoin. Next level on a 15 minutes पे देखते हैं चलो. Next is going to try 34,603. It's going to try 34,603. Yes, it will definitely try 34,603 because on a 15 minutes, 20 MA is going to cross 50 MA, which is a very bullish sign. So keep sending me thumbs up if you agree with my Bitcoin analysis. Free selling of VRL, is it finished now? नहीं जी, प्री सेल अभी भी जारी है सिलसिला until हम लोग लिस्ट नहीं हो जाते एक्सचेंज पे. हम लोग अभी प्री सेल हम लोग की जारी है. It's going on. Are you trading on news? No, I don't. I'm not a news trader. I don't trade on news.
because I don't have the luxury of time to stay glued to my screen and trade on news. But once upon a time, I used to trade news, and it was very, very exciting. It was actually very thrilling. I find trading very thrilling. Do you guys find trading thrilling? Do you think trading is thrilling? If yes, send me a thumbs up. If no, send me a thumbs down. Pepe is ready for another moon. Good, good, good. Do take profits. Sister Litecoin क्यों नहीं pump कर रहा? इसलिए pump नहीं कर रहा कि इस वक्त सारा जो investor attention है, it's towards Bitcoin and Ethereum, and institutional investors are more into Bitcoin these days. जो altcoins हैं, we will see alt rally around second half of bull run. Real token के बारे में क्या पूछ रहे हो? Real token question mark. What do you want to know about real token? ADI. I don't know how to say your name. What do you mean by? What do you want to know about real token? So yes, yes, I'm seeing bullish Bitcoin. Solana का next move है. Let's check on 30 minutes. Then we'll check on 15 minutes. Solana is going to dip क्योंकि 200 EMA is above 20 EMA. By the way, बहुत सारे लोग EMAs को नहीं consider करते. I really believe in EMAs as well. It's going to dip. It will go as low as, it's gonna retrace back to 34.63 तक retrace करेगा. अगर 34.62 पे इसको नहीं buyers मिलते तो it will drop all the way down to 34.35. And I'm talking और ये मैं तुमको scalping का बता रही हूँ. That's the scalping thing I'm telling you, because I'm working on 10 minutes chart right now. Bitcoin अभी गिरेगा, 34 hours पे जाके दोबारा से bullish हो रहा है. Fetch AI is good. Real T is reeling. मतलब what does that mean? Real T is reeling. आवे तो कर रहा सोलाना भी कर रहा है. लाइटकॉइन दो इंसान देखो इस तरह नहीं होता. ये जो आवे या सोलाना मूव कर रहे हैं, ये इस वजह से नहीं मूव कर रहे कि ऑल्ट कॉइन रैली आ गई है. They are moving because on their individual because of the individual sentiment of the investor into these tokens. ठीक है, तो just because आवे मूव कर रहा है, सोलाना मूव कर रहा है, तो लाइटकॉइन क्यों नहीं मूव कर रहा है? ये कोई लॉजिक नहीं है. हम लोग अभी ऑल सीजन में नहीं आए. ऑल सीजन आएगा बुल रन के सेकेंड हाफ में, विच शुड टेक अस टू 2024 एंड. 2024 का एंड हो जाएगा लाइक सेम टाइम नेक्स्ट ईयर. इस तरीके से जब XRP की 9th of November को एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट हियरिंग है रिपल लैब्स की, तब XRP मूव करेगा, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि XRP तो मूव कर रहा है, सोलाना क्यों नहीं मूव कर रहा आज. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. दीज आर नॉट coupled. Alls are not coupled with each other. So इस बात को समझने की कोशिश करो. They're not coupled. Fetch.ai is good. शिबा इनू कब बुल करेगा? बुल रन में. बुल रन में means it's finished. 99% down. किसको कह रहे हो? रियल्टी को कह रहे हो? बिटकॉइन अपडेट जी भी मैंने अभी बिटकॉइन की अपडेट दी आपको. अभी मैंने बताया है. मैं थोड़ा और ठहर के बताती हूँ. लाइक लिटरली मैं एवरी मिनट तो नहीं कर सकती, बट I'll tell you again. For now, on a 4 hours, it's bullish, but on a 30 minutes to 1 hour, it is bearish. So don't worry, it's going to test some levels. It's going to test some levels. हम लोगों को we really want Bitcoin to cross 35,263. 35,263 को उसको ब्रेक करना चाहिए. It should go above 35,000 for this momentum to continue. बुल रन कब है? बुल रन 2024-25 बुल रन है. You're welcome, ZP. Thank you, SF, for joining. Keep sending me the likes. Keep sharing the live. So yeah, XRP. Let's see XRP क्या कर रहा है. जो रिपल का फंडिंग रेट है बाइनेंस के ऊपर, इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव सेंटिमेंट, which means it will be bullish. We'll see XRP bullish. Selling pressure is reducing on XRP. Why? Because जो वेल की ट्रांजैक्शन काउंट है वो डिक्लाइन हुई है. मैं तुमको ऑन चेन डेटा ऑन चेन एनालिसिस करके दे रही हूँ. Yeah,
55 cents से above अगर XRP रहता है तो it is bullish. It should stay above 55 cents. Because I know many people are a big die-hard fan of XRP. XRP is, by the way, a very good trading token. अगर तुमने इसको ट्रेड करना है तो XRP, Atom, Link, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, obviously needless to say, ये सारे बहुत अच्छे trading tokens हैं. But mind you, not every token is a good trading token. For example, ADA is not a good trading token. It does not move. But Atom, Litecoin, Ethereum, ये सब बहुत अच्छे trading tokens हैं. Your reel is done and dusted, finished. I don't see it coming back at all. I think आप AK47 अब बहुत जल्दी impatient हो रहे हो. I think you're absolutely, I would not agree. I wouldn't agree for you. Not just because I was promoting it, it's just because you don't understand how this market works. Meme coin कौन से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? Meme coin की मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं बता सकती. I would never do that. किस मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? यार मैं तुम्हें मीम कॉइन्स का तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती. आई एम नॉट इनटू मीम कॉइन्स एट ऑल एंड आई सीरियसली डोंट वांट टू टॉक अबाउट मीम कॉइन्स. सोलाना कब सेल करें? डिपेंडिंग है, जब आप प्रॉफिट बनाओगे सोलाना और कितना ऊपर जा सकता है. सोलाना का मैंने आप लोगों को बताया ना, सोलाना कैन गो एज हाई एज 35.22 अगेन. 35.22 again. It should test 35.22 again. What about Solana? Solana is good. What strategies do you use to trade crypto? Depend करता है मोहम्मद. What am I doing? Am I a day trader? Am I a scalper? Am I a swing trader? Am I trading the news? Am I trading the event? Depend करता है आप क्या पूछना चाह रहे हो. Just be specific and I'll answer the question. Pre-sale है virtual X 0.0003. Mohammed Junior. लॉन्ग टर्म के लिए किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करो बिटकॉइन, इथेरियम. इफ यू शूट, आई जस्ट स्पिल्ड समथिंग. जस्ट अ सेक. काम वर्ग ऐसे खाते हैं क्या मतलब? What do you mean? मैंने तो 48 पे टॉप लगाया है सोलाना का. $48 पे आपने लाइक प्रॉफिट करना है, टेक प्रॉफिट करना है. सर व्हाट यू मीन? Expect Bitcoin and Ethereum. What would be the best altcoin to invest? Third major investment in your portfolio. Matic, Quant and Link. Matic, Quant and Link. At this point in time, I am not investing into many tokens. मेरा portfolio इतना बड़ा इस वक्त है नहीं. Why? Because I have मैंने profit taking करके अपना सारा जो major investment है ना वो मैंने USDT में transfer कर दी हुई है. And I'm waiting for some really good hidden gems because what I've realized over 12 years, मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ. एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, एंड द मोर अब जो कि नाउ आई एम अ प्रोजेक्ट ओनर माई सेल्फ, तो मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की है. आई यूज़ टू वंडर कि ये जो हम लोग कहते हैं कि आई डोंट नो क्रिप्टो वेल्स कैसे बनती हैं, मिलियंस कैसे बनते हैं इस मार्केट के अंदर. When I was younger and when I was more naive and inexperienced, so I used to think कि होता कैसे. And then I realized one thing, and let me know if you guys agree. The only way to make big money, if you're starting from a very modest background, like I started from a very modest background, I think मेरी जो first investment थी वो पता नहीं 50-60 हज़ार की थी, इससे ज़्यादा मेरे पास investment नहीं थी. If you really want to make big money, you have to go for the hidden gems and you have to go for the
private communities. You have to stick to private communities and you have to be at the right place and the right time, ताकि आप उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो जो अभी सीड फंडिंग फेज में है, जो कि अभी बहुत इनिशियल फेजेस में है, बट विथ ह्यूज पोटेंशियल. थैंक यू फ्राज. विथ ह्यूज पोटेंशियल. और उनके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उनके प्रोजेक्ट ओनर्स हैं, उनको तुम लोग ज़रूर देखो. इफ़ यू हैव एक्सेस टू दोज काइंड ऑफ कम्युनिटीज़ एंड पीपल, दैट इज़ हाउ यू गोना मेक मनी. क्योंकि हमेशा याद रखो कि जो इन्वेस्टर होता है, इट डज़ नॉट इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, इट इन्वेस्ट्स इन द एंटरप्रेन्योर, इट इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट ओनर, इट इन्वेस्ट इन द टीम. सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, पेपर पे हर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा होता है. तुम लोग कोई भी वाइट पेपर उठा लो, कोई भी तुम लोग वाइट पेपर उठा लो, हर प्रोजेक्ट तुम्हें ऐसा लगेगा कि बस दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग. ठीक है, दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग वो हम लोगों ने खुद वाइट पेपर्स लिखे हैं, हम लोगों ने खुद वेबसाइट्स बनाई हैं, तो आई नो वाइट पेपर और प्रोजेक्ट्स पे वेबसाइट पे रहोगे तो इट सीम्स हर प्रोजेक्ट लगता है कि वी आर द नेक्स्ट बिग थिंग. हाउएवर 70% ऑफ द प्रोजेक्ट्स फेल. इवन जो तुम लोग अभी भी सारे ऑल्स देख रहे हो ना, इनमें से 80-90% विल नॉट बी एग्जिस्टिंग इन नेक्स्ट 5 years. एक बुल रन के अलावा 2 बुल रन को भी शायद सर्वाइव कर जाएं. दे विल नॉट बी एग्जिस्टिंग. माई होल पॉइंट इज लुक एट द प्रोजेक्ट ओनर्स, लुक एट द टीम. मैं शुरू से कह रही हूँ, टीम को देखो, प्रोजेक्ट ओनर्स को देखो. प्रोडक्ट यस, आइडिया यस, फंडिंग यस, दीज ऑल थिंग्स मैटर. लेकिन अगर मैं तुमको सिर्फ $5 million दे दूँ, $5 million दे दूँ, तो अगर आपको पता ही नहीं कि मैंने उस $5 million को किसे 10 million बनाना है या किस तरह से 20 million बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप उस 5 million को ज़ाया कर दोगे. इट्स ऑल इन देयर. You should have a plan and you should know what you're doing. If you guys agree, please send me a thumbs up. When I'm going to invest, I'm hunting for the new projects. I am looking for the hidden gems. I have access to all these private communities. जहाँ पे ये अभी सीड फंडिंग फेज में प्रोजेक्ट्स आते हैं, and then I invest there. तो जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे, I'll keep investing. So and it's not just me. जो सारी बड़ी वेल्स हैं, अभी मैं कल पढ़ रही थी कि 1 billion जो है सिर्फ आई थिंक विद इन फ्यू आवर्स 1 billion कलेक्टिव बिलियन कॉइनबेस और बाइनेंस पे आया है इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल कॉइन्स. अब जाहिर सी बात है, स्टेबल कॉइन्स अगर एक्सचेंजेस पे जा रहे हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि फियाट में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि दे विल बी बाइंग क्रिप्टो करेंसीज, राइट? तो ऑल द इन्वेस्टर्स आर स्लोली मूविंग देयर स्टेबल कॉइन्स इनटू द एक्सचेंजेस. They're going to buy. बहुत सारी चीज़ें आप OTC से buy करते हो. Like for example, I don't buy my USDT from the exchanges. I buy from them OTC. मुझे अच्छे rates मिलते हैं, right? So yeah. So do you guys agree? If you guys agree, तो मुझे please thumbs up भेजो. ये famous words हैं. किस चीज़ के लिए कह रहे हो सौरभ खान? क्या famous words हैं? ना नज़र लग गई है आपकी चाय को इसलिए गिर गई. कॉफ़ी थी, ब्लैक कॉफ़ी थी. लेकिन कोई नहीं, मेरा सुबह से आई थिंक 4-5वां कप था, तो खैर ही है. शुक्र है ठंडी हो गई थी, गर्म नहीं थी. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Shall we invest in these coins now or wait for the dip? It all depends. It all depends. आप कौन सी बात करो? आप ऑल्स की बात करो. अगर आप ऑल्स की बाय करो तो मैटिक अभी तक आपने बाय नहीं किया. मैं शुरू से बता रही हूँ, मैटिक, सोलाना, फैंटम, चेन लिंक और क्वांट. अगर अभी नहीं बाय किया तो फिर भी सब्र करो फॉर द डिप. थोड़ा बहुत इसको नीचे आने दो. लेकिन अगर आप प्राइवेट सीड फंडिंग की बात करो, दैट्स अ डिफरेंट गेम. शैल वी इन्वेस्ट इन, अच्छा इसका जवाब मैंने दे दिया. वीआर की वीडियो कहाँ है जिसमें बाय करने का तरीका बताया है? सिजलर मैं उस पर डाल देती हूँ आपको, व्हाट डू यू कॉल इट, टेलीग्राम पे डाल देती हूँ दोबारा से. टेलीग्राम के पिन मैसेजेस में पड़ी रहती है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए दोबारा से डाल देती हूँ यहाँ पे. मैंने दोबारा डाल दिया वीडियो, हाउ टू बाय VRL ऑन टेलीग्राम. AGIX, thank you Saurabh, thank you. AGIX price prediction in the bull run. I'll be honest, when it comes to AI tokens,
I'm not too sure कि वो लोग कोई खास appreciation करेंगे, because it's a very very infant and a very new technology. Lekin just for the sake of saying something, I'll say, because although I don't want to, but I will still say because you asked. um 33 cents. Thank you, Fraz. Thank you so much. Thank you, Saurabh. Thank you, Fraz. Thank you. Good look. किस बात पे कह रहे हो, by the way, right pause? Ma'am, disclose some hidden gems. I will, with time. With time, I will. मगर पता है इतना आसान नहीं होता, because when you have the access to these private communities, they don't sell their tokens to everyone. They don't. क्योंकि they're selling very cheap and they want at least 10-20,000 की investment to begin with at least. तो अगर मैं तुम लोगों को बता भी दूंगी तो फायदा नहीं है. DUI का क्या सीन है? DUI कौन सा टोकन है? मैम बाय नेक्स्ट मूव. हाउ डू यू डू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शीदा, आप बताओ आप कैसे हो? बिटकॉइन अभी नहीं बिटकॉइन अभी नहीं बाय करना चाहिए. बिटकॉइन अभी तुम क्यों बाय करोगे? अभी तुम क्यों बाय करोगे बिटकॉइन? अभी तो बहुत हाई है, अभी नहीं बाय करना. XRP की ट्यूमर्स, कौन सी ट्यूमर्स आप उसकी बात कर रहे हो? 9th November वाली? आई टॉकिंग अबाउट दैट वन. AGIX and Fetch, please. दोनों अच्छे. Do you know about Bitgird? Please price prediction. Bitgird. B-Rise. कोई खास मूवमेंट नहीं है इसमें. I don't think it's gonna do much anyway. SEC हाँ 9th of November को है. I think they're gonna settle something under the table, but Ripple Labs is not willing to pay anymore, because Ripple Labs had already spent $200 million on this case since December 2020. So Ripple Labs will not be happy to pay anything further, but this is what SEC would want. SEC would say कि हमें और पैसे दो, हमें penalty दो. आई थिंक SEC और रिपल लैब्स का जो केस है ना, इट्स ओपन एंड शट केस. अगर मैं थोड़ा सा हाई एंड व्यू से देखूँ, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, व्हेन एज दे से व्हेन इन डाउट जूम आउट, तो अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो इट्स क्लोज एंड शट केस. Sorry, open and shut case. Why? Because Ripple Labs would be asked to pay some penalties. उस पर वो लोग negotiate करेंगे और by April हम लोग we will be seeing case settling in favor of Ripple Labs. That's what I think. Most of the coins I bought are 120% up. Shall I hold them? Shida, profit nikalo. Principal छोड़ दो, profit nikalo. Simple formula. Draw your profits and leave the principal. How high XRP will go? 1.85 or $2. Pepe coin. I'm not into meme coins. You're welcome, Kashif. मैम बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन, आप बुल रन की बात कर रहे हो, 85 to 120. Your views about homies, please. I have no views about homies. I've not studied homies. I'm not interested in homies. I have no idea about homies. AGIX is good. Would it do much price appreciation? Don't think so, because it's an AI token. I think AI का जो ट्रेंड था वो चल के मर चुका. अगर तुम लोग AI के टोकन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो ये सोच के करना कि यू आर इन्वेस्टिंग वेरी वेरी अर्ली, और तुम्हें इसके प्रॉफिट्स जो हैं, जो इसके गेन्स हैं, वो तुम लोगों को मोस्ट लाइकली 2 बुल रन्स बाद मिलेंगे. Homies first project with 6 utilities. Okay. Good for homies. All the best to homies.
Let's get on to Bitcoin. Bitcoin का analysis क्या है? Bitcoin on a 4-hour chart, it is bullish. On a 4-hour chart, Bitcoin is bullish. Why? Because but the thing is, एक चीज़ जो मुझको थोड़ी सी disturbing लग रही है on a 4 hours वो ये है कि 50 MA is fast approaching 20 MA. Not fast approaching, it's approaches. So Bitcoin needs to go as high as 35 पे दोबारा जाना चाहिए इसको. 35 to 100 से ऊपर जाना चाहिए इसको on next 4 hours. If it does, then we are good. This momentum will continue. I believe so it will continue. There's a golden cross forming on a, let's see, on a daily chart. On a daily chart, as we speak, golden cross is forming. So the 50 MA had just crossed 200 MA, which is a hugely bullish sign, very clear bullish sign. लेकिन obviously, और मैं daily chart पे तुमको बता रही हूँ, shorter time frames पे profit taking होगी, which is why हम लोग 1 hour और 4 hours पे इसको थोड़ा सा 1 hour पे हम लोग इसको bearish देख रहे हैं, 4 hours पे हम लोग इसके momentum को थोड़ा सा build up होता देख रहे हैं. But on a daily chart, a golden cross had actually formed. It's only actually formed कर रहा है as we speak. Hugely bullish sign. So profit taking होगी and then boom, we will be back to our journey upwards. 35,200, next stop 35,200. Sorry, not next stop, next target. Allah na kare next stop. Next target 35,200. If you guys agree, so please send me a thumbs up. Hi Jaka, कैसे हैं आप? ब्लू बुलरन बात कोई और टेक्नोलॉजी आएगी, AI के अबू आगे होंगे. By the way, watch out for neural networks. Neural network की technology and quantum computing. देखो AI को समझने की कोशिश करो. मैं बहुत सादा ज़बान में तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ. By the way, I actually met an AI data scientist in Dubai, and I was amazed to see him and his knowledge. I actually learned a lot from him. AI को समझो. AI एक चीज़ पे rely करता है और एक चीज़ पे चलता है, and what is that? That's called data. जितना ज़्यादा डेटा आप AI की टेक को, AI की एप्स को, AI की whatever प्रोडक्ट्स को फीड करोगे, उतना ज़्यादा it will get smarter and smarter. This is what DBC is doing, Deep Brain Chain. So they are basically working on some sort of technology जहाँ पे वो डेटा को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई और क्लीन करके in real time very quickly provide it to their clients. That's what DBC is doing, which is why I believe in DBC, Deep Brain Chain. That's an AI token, लेकिन एक वो long run का है. Like आप उसको at least 2 bull cycles दो for the price appreciation. Anyways, coming back to AI. So AI is all data dependent. जितना ज़्यादा आप data AI को दोगे या AI के projects जितना ज़्यादा data लेंगे और feed करेंगे अपने apps को, dApps को, उतनी ज़्यादा वो product successful होगी और वो adaptable होगी, वो mass adoption की तरफ जाएगी. My prime concern is with AI at this point in time. कल क्या हो, that's different thing. लेकिन मेरा prime concern at this point with AI is कि where would this processing power come from? Where would this processing power come from? It needs a lot of energy to process this data. Not just energy, resources I should say, not energy, resources I should say. It needs hell lot of resources to process this data. तो ये जो सारे AI के projects हैं जो claim कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, इनके पास data processing speed and power कहाँ से आएगी? Bitcoin is still struggling. Bitcoin को अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन, ऑल्दो अब पता चल गया है कि 80% इज़ द ग्रीन एनर्जी. बट एनीवेज अभी बिटकॉइन की हम लोग बात नहीं कर रहे. तो अगर तुम लोग AI के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ये बात समझो कि हाउ वुड दिस वर्क. In order for AI projects to work, to process the data, they need exceptional, surreal data processing resources and power. Where would that come from? Do you guys agree with me? If you don't, please मुझको thumbs up, thumbs down भेजो. मैम EO ब्रोकर कैसा है? मुझे ब्रोकर्स के बारे में कुछ नहीं पता. आप क्रिप्टो ब्रोकर है कोई EO? हाय कबूली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.
EO ब्रोकर क्या क्रिप्टो का है? अगर क्रिप्टो के ब्रोकर्स हैं तो आई हैव नो आइडिया अबाउट ब्रोकर्स. मैं ब्रोकर्स के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करती. आई डोंट लाइक ब्रोकर्स एट ऑल. 5200x टोकन बुल रन VRL. मुझसे तो पूछोगे मैं ये जवाब दूंगी. Will alls pull back or not like Quant, Phantom and other suggestions? Shall I wait for the dip? देखो pullbacks आएंगे, minor pullbacks आएंगे, कोई major pullbacks नहीं आएंगे. अगर तुम ये कहो कि Quant अभी I don't know कितने का है Quant. लेट्स से सोलाना की बात कर ले. सोलाना से $34 का है, ठीक है. अगर तुम ये कहो कि सोलाना दोबारा से $18 का हो जाएगा, ये नहीं हो रहा. $20 का हो जाएगा, ये नहीं हो रहा. अगर तुम लोग को याद है मैं पूरा साल में ये कह के थक गई सोलाना को अंडर 20-18 के बाय कर लो. मेजर पुल बैक्स नहीं आएंगे, रिट्रेसमेंट्स आएंगी यस, माइनर पुल बैक्स होंगे यस, टिप्स होंगे यस, बट नथिंग मेजर. थैंक यू नॉरिस फॉर शेयरिंग द लाइफ. वे यू सी इथेरियम शॉर्ट टर्म. यार 2200 आराम से इथेरियम कर जाएगा. इथेरियम के लिए 2200 करना कोई बड़ी बात नहीं है. बिटकॉइन के लिए 35,000 जाना. अगर तुम लोग को याद हो, अगेन मैं शुरू से कह रही हूँ, जब इस साल के शुरू से कह रही हूँ, बल्कि पिछले साल से कह रही हूँ कि हम लोग बिटकॉइन को 35,000 से ऊपर का नहीं देखेंगे इन दिस ईयर. ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा अल्लाह करे 37 का हो जाए, बट दैट्स प्रीटी मच इट. इथेरियम 2200. सोलाना का नेक्स्ट टारगेट. सोलाना आज बड़ा पंप कर रहा है, सारे सोलाना का मुझसे पूछ रहे हैं. सोलाना का नेक्स्ट टारगेट है 3517. Let me see. Let me just zoom in. 34.85 पे लिक्विडिटी ग्रैब्स है. 34.85 पे लिक्विडिटी ग्रैब है. अगर 34.85 पे दोबारा जाता है, वहाँ से दोबारा गिरेगा. और वहाँ पे जब उसके बाद गिर के इट कैन गो एज लो एज 34.61 या 34.57. फिर वहाँ से इसको मिलेंगे बायर्स एंड इट विल गो एज हाई एज 35.15. 4 आवर पे सोलाना इज बुलिश. लेट्स सी डेली पे क्या कर रहा है. वेरी बुलिश एट दिस पॉइंट इन टाइम. मेरी लाइफ ख़त्म होने के बाद क्या हो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. बायोमेट्रिक इज नॉट ब्रेकिंग 70 सेंट्स रेजिस्टेंस. इस वजह से कि उसको 70 सेंट पे बायर्स नहीं मिल रहे. प्रीटी सिंपल, वेरी सिंपल थिंग. But is Matic a good investment? Very good investment. Will Matic do $4 next bull run? Definitely it will. जगह it all depends on you. आप अभी बाय करना चाहते हो अभी कर लो. डिप्स अगर डिप्स नहीं आई सो, अगर आपको ये डिप भी नहीं मिली सो, बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव हो गया सो. It really depends on you. Do you want to take the risk or do you want to DCA? It's up to you. Binance भी केस किया है, बैन हो सकती है. नहीं यार, बाइनेंस को कुछ नहीं हो रहा. सोरा बाइनेंस की फिक्र ना करो. यस एग्जैक्टली. किस बात पे आपने सिस्लर कहा है? यस एग्जैक्टली. व्हाट कॉइन्स आर गुड टू बाय नाउ? आई डोंट थिंक सो देयर आर एनी कॉइन्स टू बाय राइट नाउ बिकॉज दे आर ऑल ग्रीन. यू नेवर बाय ग्रीन कैंडल्स, यू नेवर सेल ग्रीन कैंडल्स. हमास की फंडिंग की है, ये छोड़ो यार. ये सब होता रहता है, ना जाओ इन बातों पे. बाइनेंस इज टू बिग. बाइनेंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम, बाइनेंस की पीछे टीम, लोग, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है बाइनेंस पे. आई जस्ट डोंट वांट टू मेक इट अ बाइनेंस लाइव. इफ़ आई हैव टू सम अप, बाइनेंस इज़ टू बिग टू फेल. सो अभी फ़िलहाल बाइनेंस सुकून से कुछ मसला नहीं है बाइनेंस का. बिटकॉइन 20-25 हज़ार का नहीं हो रहा. गाला don't waste your money in Gala. Walaikum salam Reelborn. Will we see Bitcoin dump after the ETF approval or pump? नहीं. प्रॉफिट टेकिंग होगी, माइनर पुल बैक्स आएंगे, रिट्रेसमेंट्स होंगी यस. लेकिन अगर आप ये कहो कि बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूवल के बाद बिटकॉइन आई डोंट नो 40,000 से लेके 15 पे चला जाएगा, 20 पे चला जाएगा, तो नहीं, वो नहीं हो रहा. लिक्विडिटी क्रैप ये होती है कि जब एक सर्टेन पॉइंट पे बहुत सारी, जैसे मैंने शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन ओपन की हुई है, तो मैंने फॉर एग्जांपल सोलाना की अपनी TP लगाया हुआ 34.5 पे, तो बहुत सारे लोगों ने 34.5 पे लगाया हुआ. तो एक्सचेंजेस कैन सी दैट, एंड मैंने एक्सचेंजेस कैन सी दैट. तो कभी कभार वो मैनिपुलेट करके वहाँ पे प्राइस को इतना ऊपर लेकर जाते हैं. जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ओपन की थी, सॉरी मैंने लॉन्ग कह दी, शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई है. मेरी जो
what do you call it, SL है वो 34.5 पे है, तो they're gonna liquidation है वहाँ पे, तो उसको grab करने के लिए they would manipulate and they would just take the money. That's what liquidity grab means. One should have one Bitcoin by 2026. I think you should have at least few Bitcoins by 2026. Very interesting. तुम लोगों को मैं एक एनालॉजी तुम्हारे सामने रखती हूँ. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने मिलियनर्स हैं इस दुनिया के अंदर at this point, लेकिन if every single millionaire wants to buy one Bitcoin right now, I'll repeat again, if every millionaire in this world wants to buy at least one Bitcoin right now at this point in time, imagine करो कि सारे millionaires उस वक्त decide कर लेते कि हम सब के सब इसी वक्त पे एक Bitcoin buy करते हैं, तो there are not enough Bitcoins. They cannot. So I think at least 2 Bitcoins, 2 से 5 Bitcoins सबके पास होने चाहिए. और trust me, 2 से 5 Bitcoin इस वक्त की प्राइस पे ख़रीदना, अब तो खैर चलो 34-35 का हो गया, जब ये 27 का था, 26 का था, 25 का हुआ था, 30 का था. इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग. मतलब फैमिलीज़ की मैं बात करी, मैं एक इंडिविजुअल बंदे की बात नहीं करी. जिस तरह गोल्ड रन्स इन जनरेशंस, राइट, generations gold hold करती हैं, तो why can't we hold Bitcoin in generations? And why can't one family buy at least few Bitcoins if we can trust the family? And if they have that vision, ये भी बहुत बड़ा मसला है. कितनी families के पास इस वक्त vision होगा? ज़्यादा के पास नहीं, बहुत कम होंगी. Good morning, Shrish. What you will suggest is a good time to buy and which coins, please? I think it's not a good time to buy. I think hold on to your USDTs. USDT तुम्हारे तैयार होने चाहिए exchanges के अंदर. तुम्हारी USDT पार्क होने चाहिए exchanges के अंदर. This is exactly what every sane investor is doing right now. उन्होंने जो buying करनी थी वो उन्होंने buying कर ली summer के अंदर. अब they are not buying, they're just holding on to USDT, waiting like a hawk. चील की तरह. चील तो hawk नहीं होती है, hawk को उर्दू में जो भी कहते हैं. Waiting like a hawk to get onto these projects जो कि अभी आ रहे हैं, जो कि private communities में आते हैं, जो कि seed funding phase में आते हैं. So they're gonna buy those ones. They will not be buying Solana, Phantom, ADA. ये सिर्फ retail investors का काम होता है. और मैं तुम लोगों को बता इस वजह से रही हूँ कि I know the insider. I know a lot of the insider things because of course I move in those circles, right? जो बड़े investors हैं, they're not waiting to buy Phantom, Solana, ADA. They have already bought it. They're waiting with their USDTs in the exchanges and wallets and OTCs to get onto the projects जो कि backed by solid वो हों, fundamentally strong हों, team पे वो invest करेंगे, and that's how this market works. Send me thumbs up if you guys agree. How you know where is liquidity? Liquidity grabs के बहुत सारे indicators होते हैं. Shoaib Labib on Telegram, not Telegram, on TradingView. What price do you see Bitcoin at after ETF approval? That's difficult to say, to be honest. लेकिन it's a very good question actually. कितनी हो जाएगी? 47, 50, 55? आराम से. Thank you, Dees. Thank you so much. Can you predict UFT for this week, please? UFT क्या है? मुझे प्रोजेक्ट का नाम बताओ पहले. कोई कॉइन्स बताओ प्लीज. VRL मुझसे तुम पूछोगे तो VRL ही बताऊंगी मैं. थैंक यू सो मच सौरभ. किस बात पे आपने कहा है गुड वन? आज क्योंकि मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ तो आई ऑल्सो फॉरगेट मैंने अभी क्या कहा है, तो मुझे प्लीज बताओ किस बात पे आपने कहा है गुड वन, बिकॉज आई वुड नो कि आप लोग किस बात से एग्री कर रहे हो, किस बात से डिसएग्री कर रहे हो. हाय साबिर, कैसे आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच साबिर, बहुत शुक्रिया. डू थिंक सोलाना विल गो अप 50 बाय एंड ऑफ 2023? 50 कर सकता है, इतना मुश्किल टारगेट नहीं है सोलाना के लिए, लेकिन आई थिंक लेट मी सी. सोलाना $50 का करेगा बाय ईयर एंड.
$50 का था ये 11 अगस्त 22 में, तो इट हैज़ बीन, नहीं इतनी आसानी से नहीं करेगा ये $50 का बाय ईयर एंड, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी $50 प्राइस थी, इट वॉज इन अगस्त 2022, इट हैज़ बीन मोर देन अ ईयर। नहीं नहीं, हाँ अगर बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता तो फिर ये सारे रैली करेंगे। स्पॉट ETF अप्रूवल कब होगा? गुड क्वेश्चन। शुड बी हैपनिंग अराउंड मार्च नेक्स्ट ईयर। I'm not seeing any reason, unless a forced reason. I'm not seeing any organic reason for its approval in this year. There's no organic reason as in right now. लेकिन you don't know, वो उनको अपनी गेन्स करने के लिए वो कोई भी फेक रीजन whatever बना के तो अप्रूव भी कर सकते हैं. It all depends on them. XRP versus Matic, better investing. Definitely Matic. Definitely Matic, Kashi Billa. Definitely Matic, undoubtedly. XRP is not a good investment token. XRP investment token नहीं है. इसकी brightness क्यों? XRP is not a investment token. XRP is a very good trading token. XRP is very good utility token, but it's not an investment token. So there are differences. There's a difference between utility token, trading token, and investment token. Investment token at this point in time मैं कहूँगी Matic है. ठीक है, अंडर 50 सेंट्स कितना का मैटिक? 70 अंडर 70 सेंट होगा ना, डेफिनेटली 50-60 सेंट के अराउंड होगा. मैटिक बाय करो. इट शुड गो टू एज हाई एज $4. लेकिन ये जो बातें हैं कि XRP $5 $10 का हो जाएगा, दैट्स नॉट गोना हैपन. मैं बहुत दफ़ा पहले ही बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि अगर तुमको ये कहते हैं कि XRP 50 सेंट से $10 का हो जाएगा, $5 का हो जाएगा, तो इट मीन्स दैट यू आर सेइंग कि इट शुड डू 10x, राइट? 10x करने के लिए अगर XRP 10x का करता है तो उससे पहले बिटकॉइन को 10x करने की ज़रूरत है, विच शुड टेक इट्स प्राइस टू 27,500, सॉरी 270,500. क्या बिटकॉइन 270,000 का हो रहा है? नहीं नहीं. हाँ 2050 में हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सॉरी 2050 कह रही हूँ, 2030 में हो जाए, 2035 में हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम XRP को $5 का होने के लिए बिटकॉइन को 270,000 का होना पड़ेगा, 10x करना पड़ेगा. दैट्स नॉट गोना हैपन. VRL कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा? मैक्सी ग्लोबल. गुड लुक. VRL का कौन सा कॉइन, VRL कौन सा कॉइन बेस्ट है? VRL itself is a coin. क्या मतलब VRL कौन सा कॉइन बेस्ट है? But the deadline is January 2024. मार्च, कुछ की जैन में है, कुछ की मार्च में है. तो जिनकी जैन में, आई थिंक आर्क की जैन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ब्लैक रॉक की आई थिंक मार्च है. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट या इट शुड स्टार्ट, इट शुड लाइक फर्स्ट क्वार्टर. आई वुड से Q1 2024. Thank you for valuable opinions. Solana versus Matic, better investment. Again Matic. Solana can only go as high as let's do this thing. It's a good question actually. Assuming कि Solana $34 से हो जाता है $250, मुझे नहीं लगता 250-300 ज़्यादा का होगा, तो it's gonna do 635%. ठीक है. और अगर मैटिक 50 सेंट से $4 का होता है 63, तो मैटिक इज गोना टू 700%. सो यू डू योर मैथ्स. सोलाना अगर अभी की प्राइस से, मैं ये नहीं कही तुम लोगों ने $20 पे ख़रीदा है तो सोलाना का क्या होगा. सोलाना अगर अभी की प्राइस से $250 का हो जाता है तो इट्स रफली 600%. और अगर मैटिक अभी की प्राइस से $4 हो जाता है तो अराउंड 700%. सो यू फिगर इट आउट. बट इन माई ओपिनियन मैटिक के पास ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोलाना, क्योंकि मैटिक का कॉम्पिटिटर है ARB, नॉट डूइंग मच. सोलाना का कॉम्पिटिटर है सुई, डूइंग बेटर. और सोलाना के और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, नेयर प्रोटोकॉल. तो इफ आई हैव टू चूज वन, आई विल हैप्पीली चूज मैटिक बिटवीन सोलाना एंड मैटिक. फीलिंग्स पे अगर प्राइस प्रेडिक्शंस होने लगी तो फिर तो मैं कहती हूँ मुझे तो फीलिंग है बिटकॉइन 1 मिलियन का हो जाएगा. फीलिंग्स में नहीं चलता. बट या मैटिक इज वेरी गुड वन. When coin go on rally, should we take profits? Definitely.
जब आपके प्रॉफिट बनते हैं तो आप प्रॉफिट लो, प्रिंसिपल छोड़ो, प्रॉफिट निकालते रहो, प्रिंसिपल छोड़ो. ये बुल मार्केट में प्रिंसिपल चलता है. थैंक यू गाइस फॉर द गिफ्ट्स. बुल मार्केट में ये प्रिंसिपल चलता है. जहाँ प्रॉफिट बने निकालो, प्रिंसिपल छोड़ो, प्रॉफिट निकालो, प्रिंसिपल छोड़ो, प्रॉफिट निकालो. और अगर तुमको ये लगता है कि फॉर एग्जांपल सोलाना 200, दिस विल बी माई स्ट्रैटेजी. मैंने सोलाना $20 का खरीदा है. जब ये $200 का हो जाएगा बुल रन में, मैं अपने पैसा निकाल लूँगी सोलाना से, बिकॉज आई नो कि सोलाना के पास पोटेंशियल नहीं है 250-300 से ऊपर जाने की. जा भी सकता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं जा सकता, लेकिन ऑफकोर्स मैंने अजम्पशंस करनी है, ऑफकोर्स मैंने एक सिनेरियो क्रिएट करना है. तो मैं सोलाना से अपना पैसा पुल आउट कर लूँगी, अपना प्रिंसिपल भी पुल आउट कर लूँगी फ्रॉम व्हेन इट रीचेस 200. I don't want to wait until 250. It may or it may not go, and then I'll put into some other token जो मुझको उस वक्त ट्रेंडिंग करता दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है कि इसकी पोटेंशियल हो. ये 3-4 महीने तो अपनी हाइप के बेस पे प्राइस अप्रिशिएट कर देगा. देखो मार्केट को समझने की कोशिश करो. इट्स नॉट एज सिंपल एज सोलाना खरीद लिया, फैंटम खरीद लिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से न्यूज़ जो होती है किसी भी टोकन की, हाइप क्रिएट किस तरह की जाती है, मार्केट मेकिंग क्या होती है, एक्सचेंज लिस्टिंग्स क्या होती है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट क्या होता है, और किसकी बेस पे फिर वो टोकन्स प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. कोई ऑल्ट कॉइन बताएं जो अच्छा प्रॉफिट दे इस टाइम पे. उमर, मैटिक, सोलाना, दीज आर द 2 ones. क्वांट, लिंक. I have 5% of Matic in portfolio. After hearing you so many times, I'm looking for 8 to 9%. डिपेंड करता है. अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% से ज़्यादा कभी भी किसी ऑल्ट में मत डालो, अनलेस इथीरियम है. अनलेस ये इथीरियम है. अगर इथीरियम है तो गो फॉर हाई. देखो प्रिंसिपल क्या है, इट्स माई प्रिंसिपल माई इज़ 50-25 या 50-25-25. तो 50% आपका होगा बिटकॉइन में, 25 बिटकॉइन इथीरियम में, 25% आपका जाना चाहिए इनटू बिगर लाइक लार्ज मार्केट कैप्स, और जो 25% है आपका जाना चाहिए लो मार्केट कैप्स में, हिडन जेम्स में, मीम्स में. दैट्स हाउ आई वुड. तो 50-25-25 के प्रिंसिपल पर दिमाग में रखो अपना फॉर पोर्टफोलियोज. आई डोंट थिंक सो मैटिक की भी प्राइस ऊपर गई हुई. मैटिक कितने पैसा मुझे बताओ. आई थिंक मैटिक की प्राइस ऊपर गई हुई है. अब ओवरऑल बिगर पिक्चर में मैटिक अंडर 70 ऑलवेज को 64 है, भी मत बाय करो. और मैटिक जो है वो थोड़ी देर में डिप करेगा. इट विल डिप इन अ डे और सो, क्योंकि डेथ क्रॉस बन रहा है ऑन अ 4 hours शॉर्ट. तो मैटिक को तुम बाय करना. 60 सेंट से अगर तुम्हें नीचे मैटिक मिल जाता है ना तो जैकपॉट है. फिलहाल 65 पे गया था, 64 पे आ गया. वही गिरेगा, ये 60 पे दोबारा आएगा, 62-60 पे तो ये दोबारा आएगा, तब बाय कर लेना मैटिक. About Solana 14, but sadly sold it. Oof. चलो यार. 100% dot good to right now. I am not a believer of dot. XRP is banker's coin and it will move the world currency. Don't take it as a cryptocurrency. XRP is not a banker's coin. XRP is a remittance coin. Banks don't like XRP. Banks hate XRP. Banks hate cryptocurrency. Thank you, Mayor. XRP is a remittance token. It's a remittance coin. हाँ, ये बात मैं ज़रूर तुम्हारी एग्री करूँगी कि banks उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, but they are not using it. They will not be using it in their daily banking transactions. ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक जाओगे और आप अपने पैसे विड्रॉ करोगे और वो आपको XRP टोकन आई डोंट नो रिवॉर्ड में दे देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. It's a remittance token. It has huge potential. It has got a huge utility. It's disrupting the remittance market. ये hundreds and billions of dollars बचाएगा per annum across the globe. I totally agree. लेकिन अगर आप ये कहो कि XRP is a good investment token, मैं अभी XRP लेता हूँ 50 cent का as an example और ये 10x कर जाएगा, that is not gonna happen. That is what I say. That is what I teach you guys. That's not gonna happen. तो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ XRP. और XRP पूरी क्रिप्टो मार्केट, जो XRP रिपल लैब्स SEC के साथ केस लड़ रहा है, ये बेसिकली अपने लिए नहीं खाली लड़ रहा, इट्स फाइटिंग इट फॉर द एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री. रिपल लैब्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है क्रिप्टो मार्केट को यहाँ तक लेकर आने में. टोटली अग्री. फिनोमिनल टोकन, वेरी गुड टीम, हाई पोटेंशियल, एवरीथिंग, बट इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट टोकन. XRP की जो वेल्स हैं या XRP के जो जिन लोगों ने पैसा बनाना था XRP से, वो उसके अर्ली इन्वेस्टर्स थे, नॉट यू एंड आई. अगर हम लोग XRP को आज बाय करते तो डोंट एक्सपेक्ट मच गेन्स. हाँ, अगर तुम कहते हो कि यार चलो
50 सेंट का मैंने बाय किया, $1.5 का हो जाएगा, आई एम हैप्पी विद दैट, यस। तो फिर इफ़ यू आर हैप्पी विद दैट, ओनली दैट लिटिल गेन, अप टू यू। डू यू गाइस एग्री विद मी? XRP के ऊपर प्लीज़ मुझको बताओ। प्रॉफिट लो क्या मतलब? जस्ट 20%, 20% प्रॉफिट कम है, बेयर मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 20% बुल रन में हाँ प्राइस जो है वो 10-12% मूव करती है एक दिन के अंदर, लेकिन बेयर मार्केट में तो 20% मूव होना महीनों लग जाते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लो मूवर, कितने ऊपर जाएगा मूवर? इट्स गोना retrace, it's gonna test 4.54, 4.542 मूवर। लेकिन एक्चुअली लेट मी सी, ये बुलिश है, हाँ बुलिश है 4 आवर्स पे, इट्स बुलिश ऑन 4 आवर्स। शिबा का फ्यूचर ब्राइट है, सॉल आ गया $20 पे। मुश्किल लग रहा है यार, सोलाना का 34 से 20 पे गिरना मुश्किल लग रहा है, डोंट थिंक सो। और बहुत खूबसूरती से ये ऊपर जा रहा है, ब्यूटीफुल चार्ट, क्योंकि इसको बहुत अच्छी सपोर्ट है 25, पहले 28 पे, पहले 27.15 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है सोलाना को ऑन ए डेली की बता रही हूँ। फिर $25-26 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, फिर $24 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, पूरे चैनल्स बने हुए, थिक चैनल्स बने हुए हैं सपोर्ट के। तो $20 पे आना सोलाना, at this point in time I'll struggle to see how it will dip that low. इथेरियम की बेस्ट बाइंग प्राइस लॉन्ग टर्म 1400 है, 1400-1600 पे बाय कर लो। I bought more in last term, holding over 500 million now. मैटिक कह रहे हो शीदा? आपकी मर्जी काशिफुल्ला, आपने बाय करना है तो। अगेन जो मैंने लाइफ की शुरू में कहा था, आस्क योर सेल्फ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स and what kind of risks are you targeting. If you are happy with low risk, low gains, go for big market caps, altcoins, Solana, Phantom, Matic, Link वगैरह. But if you want big gains, bigger gains and high risk, then these are not the tokens to invest. So it really depends upon it. Have you heard much about the trading platform Manara? Haven't heard it. CryptoSyncs use 07. Pepe long term investment अच्छी है. Pepe is a meme coin. I don't think so because of the ETF approval and that's before January. Liver update. Liver की क्या update चाहिए आपको? मुझसे यार पूछा करो, exact सवाल पूछ रहे हो. What do you want me to tell you about liver? What? Update का क्या मैं जवाब दूँ? Exact question पूछा करो. Me 200% profit में बैठा सोलाना का. तो सोलाना का तुम प्रॉफिट ड्रॉप करो और व्हाट डू यू कॉल इट, प्रिंसिपल छोड़ दो। लेट्स से तुमने $20 का प्रॉफिट $20 का ख़रीदा था सोलाना, तो अपने प्रॉफिट लो और प्रिंसिपल छोड़ दो। How was my Dubai? My Dubai trip was very good, Ronnie. Had a blast, met so many exchanges, met so many market makers, met so many investors. I went to the GITEX event, blockchain one. GITEX के काफ़ी सारे थे. I went to the blockchain one and it was amazing. I met many DEXs. Amazing projects coming up, amazing DEXs coming up. I'm so excited about DEXs. So it was very good. Thank you for asking, Tony. Thank you so much. Besides VRL, what are the projects? Low market cap, low price, hidden gems, DBC, Deep Brain Chain, Saucer Swap. फिलहाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है. बिटकॉइन एंड इथेरियम बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा? डिपेंड करता है. बिटकॉइन इथेरियम की बाइंग अपॉर्चुनिटी का इंतजार मत किया करो, डीसीए करते रहा करो. When it comes to Bitcoin Ethereum, don't wait for the exact, let's say 27,000 or 30,000. Just keep DCAing. अपना एक दिन बना लो, जैसे मैंने Wednesday बनाया हुआ है. So every Wednesday I'll just keep putting in little money into Bitcoin, Ethereum, Matic. I'm very big on Matic. I'm a big believer of Matic. Or Phantom. I'm a big believer of Phantom as well.
तो या एवरी वेंसडे अपने शॉपिंग डे बना लो और थोड़ा थोड़ा उसमें जो भी डीसी बिटकॉइन इथेरियम को तो डीसीए करते रहो। बिटकॉइन इथेरियम ऐसे टोकन्स नहीं है कि आप ये कहो कि अभी ऊपर नीचे जाएगा तो मैं इंतजार करूँगा, हो सकता है नीचे जाए, हो सकता है नीचे ना जाए, फिर आप क्या करोगे? अगर मिस दिस प्राइस इज वेल, लेट्स से 35 से 34 से 35.2 का हो जाता है, जो कि इसमें होना है, जो कि आई कैन सी 1-2 दिन के अंदर होना है, मे बी घंटों में हो जाए, तो आई विल नॉट वेट, आई कीप डूइंग डीसीए। सो व्हेन इट कम्स टू बिटकॉइन इथेरियम डीसीए करते रहा करो। मैटिक को डीसी कर सकते हैं, हाँ करो मैटिक को डीसी, क्यों नहीं कर सकते? मैटिक इतना सस्ता है, 60 सेंट का इस वक्त, तो मैटिक को क्या डीसीए करोगे? लेकिन हाँ 64 का आई थिंक 62 पे बाय कर लो, 32.6 पे लॉन्ग किया हुआ है सोलाना। नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे मुझे प्रोजेक्ट्स पता है, वो आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपको एटलीस्ट 10K की होती है। सो फॉर एग्जांपल जिन प्राइवेट कम्युनिटीज़ के साथ मैं हूँ, मैं उनको दे विल गिव मी एक्सेस बिकॉज आई नो दैम पर्सनली, मैं उनसे फिजिकली लाइक ऑफलाइन वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में मिली हुई हूँ, राइट? तो वो मुझको एक्सेस दे देंगे क्योंकि वो बहुत सस्ते टोकन्स बेच रहे हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि अच्छा चलो आई इंट्रोड्यूस यू टू समवन जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, ठीक है? तो यू हैव टू एटलीस्ट गो फॉर 10,000 इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर कोई 10,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा तो फिर मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो ख़राब होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो लेट्स से मैं जैसे कि VRL की बात कर लेते, बिकॉज इट्स माई प्रोजेक्ट, तो मैं ओपनली इसके बारे में बात कर सकती हूँ, मैं और किसी को नेम नहीं कर सकती इस वक्त। मैं VRL की प्रोजेक्ट ओनर नहीं हूँ, ठीक है? वकास मुझसे कहते हैं कि यार ये बंदा है तो ये इन्वेस्ट करना चाह रहा है प्री सेल सीड फंडिंग में, तो मैं कहूँगी ऑफ कोर्स ठीक है, 10K से मिनिमम नहीं होगा। वो बंदा उसने मुझे कनेक्ट कर दिया, फिर वो आकर कह रहे नीचे मैंने 10 का नहीं लेना, मैंने 5K का लेना है, तो मेरा फिर वकास का आपस में कॉन्टैक्ट खराब होगा। मैं कहूँगी यार तुमने मेरा टाइम क्यों ज़ाया कराया? Why did you waste my time if he was not interested in investing 10K? That is the thing. अगर कोई बहुत सीरियस तुम लोग इन्वेस्टर्स हो एंड यू वांट मी टू कनेक्ट टू दोज पीपल, आई कैन कनेक्ट टू दोज पीपल, लेकिन फिर शर्त है कि एटलीस्ट 10 जो भी उनकी अपनी होगी 10-20, हर किसी की अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 10-20-30K, देन यू हैव टू बाय 10-20K। फिर मेरा कॉन्टैक्ट नहीं खराब करना, बिकॉज ये इतनी छोटी मार्केट, इतनी इन्फेंट मार्केट है और हम लोग सारे बहुत क्लोजली नेटेड हैं। मैं प्राइवेट कम्युनिटीज़ की बात कर रही हूँ, क्रिप्टो प्राइवेट कम्युनिटीज़ की बात कर रही हूँ, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मैं अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं खराब करूँगी इस चक्कर में कि अभी तुम लोग कह रहे हो कि हमने 10K का करना है, फिर जब वहाँ तक पहुँचोगे तुम लोग 2K कहोगे, तो मेरी वहाँ पे बात खराब होगी। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज हाउ इट वर्क्स एटलीस्ट इन दिस मार्केट। डू यू गाइज एग्री? मुझे बताओ। मैं बहुत सारी तुम लोगों को अंदर की बातें बता देती हूँ यहाँ बैठ के, लाइक आई जस्ट कीप सेइंग, आई जस्ट कीप टॉकिंग, इतनी सारी मैंने तुम लोगों को अंदर की बातें बता दी हुई है। एनीवेज अब तो बता दी, अब तो मैंने कह दी, अब तो हो गई, लाइफ पे चली गई सारी बातें। एडा का फ्यूचर आई डोंट थिंक सो। एडा का फ्यूचर, एडा का डेवलपमेंट अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन आप ये कहो कि उसकी अच्छा गुड टोकन, गुड इन्वेस्टमेंट टोकन है, तो नहीं, डोंट थिंक सो, इट डजंट मूव। आज आगे जाके मूव करेगा। लेकिन हाँ एडा का कार्डानो का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है दुबई के अंदर, आई थिंक 1 से 3 नवंबर को। आज क्या है? 30 अक्टूबर है। 5 दिनों में हो रहा है, तो इट शुड मूव अ लिटिल बिट, बट कोई खास नहीं हो रहा काम एडा के साथ। Not looking good. Maybe it give 4 to 5x in bull run for not sure. Agreed. किस बात पे अग्री किया शीदा आपने? आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रही हो। रील बोन आपका क्या क्वेश्चन है? 1K मैटिक एवरेज प्राइस 1.05, शुड रिड्यूस इट? आपने डॉलर पे खरीदा हुआ है। पता है क्या करो रील बोन, आप कुछ ना करो, आप बस जितना बाय किया हुआ ना उसी पे बैठे रहो, डोंट पुट मोर। अब मुझे ये नहीं पता कि आपका टोटल पोर्टफोलियो का अमाउंट कितना है। अगर आपने अपने टोटल पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 2 to 3% ऑलरेडी मैटिक में डाला हुआ है, तो फिर और मत बाय करो, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, दैट्स नॉट हाउ इन्वेस्टमेंट्स वर्क। तो चलो अब तुम लोग मुझे बताओ कि मैं तुम लोगों को इतनी अंदर की बातें बता देती हूँ तो तुम लोग अग्री कर रहे हो? डज दैट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस? लेट मी नो। 30K टोटल पोर्टफोलियोज का आपने 1000 इसमें डाला हुआ है। तो आप ऑलरेडी 3% डाल चुके हो ना, तो बस काफ़ी है, और मत करो। अग्री? अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। GMM मैक्स ग्लोबल पर इसकी प्राइस प्रिडिक्शन क्या है? GMM मैक्सी पे है, MEXC, मैक्सी का नाम MEXC है। GMM लेट्स सी GMM क्या करेगा।
किसी ने मुझसे लिवर का पूछा था, मेरे पास चार्ट खुला हुआ है. And now I don't have the question for GMM. Oh, sorry, liver, GMM. Gamium. Very bullish on 4 hours. 1 hour and daily is bullish. It should go as high as max. ये ट्राई करेगा 00049 को, फिर ये ट्राई करेगा 00049 को, और फिर ये ट्राई करेगा 0000508 को. GMM. I was liquidated in Matic future coin before average was 0.8. अच्छा, okay, real bond 100% agree. Great, thank you. Loom. Thanks. चलो मैं Loom check करके then I'll go off. Loom USDT. Bearish. Open ना करना, long ना open करना Loom की. The party is over for Loom. जितना पंप शम करना था ना इसने कर लिया, इसकी पार्टी ओवर हुई हुई है Loom की. इसको नेक्स्ट सपोर्ट है 0.11176 पे Loom. चलो guys, thank you for joining. I'll sign off now. I think I'm going to do live again in the evening. I'm not exactly sure. If I will, you'll see me. If I don't, you'll see me tomorrow. Bye Sizzler. मैटिक पंप करेगा, लेकिन ये मत समझने कि 1-2 हफ्ते में पंप करेगा. इट शुड टेक टाइम, बट मैटिक इज गुड. इट्स अ गुड वन. चलो गाइस, थैंक यू सो मच. बाय वलीद, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय. चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. You're welcome.